So hey guys, I'm finally back with another video. और जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया होगा, yes you got that right. I will be recommending some interesting, not very hyped, और अगर hype भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, documentaries. Yes, after a long time मैं एक recommendation video कर रही हूँ. Also, I just want to make two things very clear. Firstly, I have watched a lot of documentaries from docu-series, American docu-dramas, true crime, explainers, Netflix explainers, documentaries on terrorism, documentaries on cults, so many documentaries. But काफ़ी सारी ऐसी documentaries है जो streaming platform से हट चुकी है. And I have also lost my memory on so many good documentaries that I watched because वो बहुत पहले मैंने देखी थी. So I really don't know and I really don't remember. I just remember the gist of those documentaries, which is why I couldn't recommend more documentaries. I could only recommend 5 documentaries. Number 2, I will be only telling the gist. मैं सिर्फ बहुत ही थोड़े से डिटेल में जाने वाली हूँ because obviously I do not want to spoil the entire documentary. नहीं तो फिर मेरी वीडियो ही देख लेते ना, डॉक्यूमेंट्री क्यों देख रहे हो, मैं ये रिकमेंडेशन वीडियो क्यों ही बना रही हूँ. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट मी स्टार्ट विद नंबर 1 on my list. That is Dancing on the Grave. Now Dancing on the Grave is on Amazon Prime. It is actually Prime Video's first Indian true crime docu drama, as I may like to call it. It is on the murder of Shakari Namazi or Shakari Khalili, as anyone would like to call it. ये इंसिडेंट बैंगलोर में हुआ था. द मर्डर ऑफ शाकरी खलीली. येस यू गॉट दैट राइट. अगर आपने उसके प्रोमोस कहीं पे देखे, अगर आपने उसका ट्रेलर देखा होगा, या अगर आप बैंगलोर से होगे तो आपने इस इंसिडेंट के बारे में सुना होगा. स्पेशली दिस इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द 90s, द अर्ली 90s ऑफ बैंगलोर. ये इंसिडेंट बताता है मर्डर ऑफ शाकरी खलीली के बारे में, जो कि अपने ही घर में जिंदा दफनाई गई थी बाय नन अदर देन हर सेकेंड हस्बैंड Swami Shraddhanand. And it is about Shakri Khalili's life, her first marriage, her background, where she came from, her ambitions, how she met Swami Shraddhanand, and also it gives the point of view from Swami Shraddhanand's perspective as well. Yes, he is still alive. सो फर्स्ट एपिसोड में आपको ऑब्वियसली थोड़ा बैकग्राउंड पता चलेगा एंड शाकरी खलीली के लिए थोड़ी सिंपैथी आएगी ऑफ कोर्स. बट देन इन द सेकेंड एंड थर्ड आपको स्वामी श्रद्धानंद का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा. देन इन द फोर्थ एपिसोड ऑब्वियसली लीव यू स्लाइटली कंफ्यूज्ड. इस डॉक्यू ड्रामा को देखने के बाद पर्सनली आई वॉज इन 2 frames ऑफ माइंड एंड आई बिकेम वेरी कंफ्यूज्ड. एक तरफ आपको सिंपैथी आएगी ऑफ कोर्स फॉर शाकरी खलीली एंड हर फैमिली. स्पेशली यू विल फील लाइक हैविंग रिगार्ड्स फॉर द सेकेंड डॉटर Sabha, who put in a lot of relentless effort in searching for her mother. But on the other hand, आपको श्रद्धानंद का point of view भी सुनने को मिलेगा and you will be in 2 minds. Speaking of the technical aspects, it is very well narrated. It is like अगर Prime Video किए and Prime Video India किए first ट्रू क्राइम डॉक्यू ड्रामा, बिकॉज यूजुअली डॉक्यूमेंट्रीज में नेटफ्लिक्स का ही डोमेन होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड टू एन एक्सटेंट सोनी लिव एंड ऑल. बट अगर प्राइम वीडियो इंडिया ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है एंड you know with India Today originals and taking all the news footages and everything, और ये क्राइम स्टोरी बाय द वे देसी क्राइम्स पॉडकास्ट पे भी आ चुकी है which is on Spotify, आप सुन सकते हो उसको. Then it is very well made, like very well made docu drama. It really captured for me the essence of who Shakari was. The actors were picked perfectly, the setting was done aptly, and काफ़ी कुछ इसमें blend करके लिया गया है, right from witness statements, kin interviews, news journalist के क्या perspectives है, psychologist perspective, to recreating a particular scene with actors like a proper docu-drama. It is a very well blended docu-drama. Dancing on the Grave सिर्फ शाकरी खलीली की लाइफ के बारे में नहीं बताता, उसकी मैरिज के बारे में नहीं बताता, स्वामी श्रद्धानंद के पर्सपेक्टिव से भी नहीं बताता, but it also touches upon a lot of human aspects and human nature such as loneliness, women wanting their own agency, and also other facets such as religious bigotry, classism, elitism. How is it like to become a housewife, especially such a rich housewife जिसके पास सब कुछ होता है but she chooses to give up everything, and why?
सो काफ़ी आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आएंगे आफ्टर वॉचिंग दैट डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो। काफ़ी सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन और भी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में रह जाएंगे। नंबर 2, नाउ दिस इज, अगर आपने वाइल्ड वाइल्ड कंट्री या चर्च ऑफ साइंटोलॉजी पे डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री तो चलो एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से थी, बट अगर आपने कल्ट्स के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी तो यस, या बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली क्रिश्चियन कल्ट्स के बारे में अगर आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, देन यू गेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यस, स्पीकिंग ऑफ नंबर 2, दैट इज कीप स्वीट pray and obey. Now keep sweet, pray and obey is about the life of Warren Jeffs and the FLDS cult, and वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की जो FLDS की कंट्रोवर्सी थी उसका क्या हुआ, वहाँ की जो औरतें थी, especially the women of FLDS, how did they survive the whole FLDS cult, because FLDS cult में, which is kind of a Mormon church cult as a lot of people kind of call it, I know I'm not phrasing it the right way, उसमें ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है कि आप मल्टीपल मैरिजेस करते हो। लाइक देयर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी वुमेन अ मैन कैन मैरी। लाइक मेन कैन मैरी like more than 10 wives. Warren Jeffs himself had like more than 70 wives. More than 70 wives. I hope I'm getting the numbers right. And a lot of those women were underage when they got married. So बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताती है about underage marriages, pedophilia in cults, and how did these women survived such a scarring cult. So ये बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल भी है, बट काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट वार्निंग भी अबाउट चाइल्ड अब्यूज़ एंड पीडोफीलिया, एंड काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है उनके लिए जो कि इन सब चीज़ों से सर्वाइव कर चुके हैं। हाउएवर नॉनदलेस इट इज़ अ 3-part डॉक्यू सीरीज जहाँ पे आपको पहले FLDS की लाइफ के बारे में पता चलता है, कहाँ से FLDS आता है, एंड आफ्टर वॉरेन जेफ्स फादर रूल ऑन जेफ्स पासिंग, वॉरेन जेफ्स के रूल में क्या क्या हुआ। डू वॉच कीप स्वीट, प्रे एंड ओबे, इट इज़ ऑन नेटफ्लिक्स। नंबर 3 जिस डॉक्यूमेंट्री की मैं बात करने वाली हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट वार्निंग, दैट डॉक्यूमेंट्री contains suicide and self-harm. Yes, it is a deeply disturbing documentary. It is not meant for the faint-hearted. It is not meant for those people जिनके दिमाग में suicidal thoughts आ रहे हैं. I am talking about House of Secrets. Yes, it is based on Burari incident in Delhi. It is a usual true crime documentary, as I would like to call that. बहुत ही disturbing, and it is not meant for the faint-hearted. It is definitely not meant for the faint-hearted. But let me tell you, अगर मैं technical aspects पे जाऊँ, जिसने ललित की आवाज़ की, brilliant. It is haunting. It is scary. It will remain in your mind for life. It will feel like as if the person Lalit is narrating to you his own diktats. और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी, like how people are so ignorant about mental health and mental illnesses डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड, और मेंटल इलनेसेस के अलावा काफ़ी सारी चीज़ों को भी दर्शाता है, जैसे कि मीडिया का सेंसेशनलिज्म ऑफ दिस केस, एंड हाउ people, many unknown and unrelated people just want their 2 minutes of fame, and how blindly we listen. We humans, we tend to listen to our elders without questioning it also, even like it happened with those young kids. They were not even questioning what was happening inside the house. Imagine 11 members of a family dying in a single house. That itself is disturbing. And there is no murder, no signs of murder, no person entering the house. Number 4, now अगर आपने documentary देखी है, then definitely आपने इस केस के बारे में सुना होगा. It happened in the UK and Portugal में ये काफ़ी ज़्यादा बात चली थी. This documentary is called The Disappearance of Madeleine McCann. Yes. Now this documentary is about a young 6 to 7-year-old girl called Madeleine McCann, if I'm getting the age right. She goes missing on a family holiday in a resort in Portugal, and for more than 13 years she has not, till this date she has not yet been found. Yes, the disappearance of Madeleine McCann वो भी काफ़ी disturbing है, but काफ़ी ज़्यादा
आपको ह्यूमन नेचर एंड हाउ मीडिया ट्रायल रियली हैपन्स, इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा दर्शाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग में सवाल उठते हैं कि ये बच्ची गायब कैसे हुई, एंड विल शी बी एवर बी फाउंड, विल शी बी एवर बी अलाइव, क्या वो मरी भी मिलेगी या क्या वो जिंदा होगी, एंड द ऑर्डियल ऑफ मैडलेन मैकेन्स पेरेंट्स। काफ़ी इंटेंस डॉक्यूमेंट्री है, काफ़ी वेल मेड और काफ़ी न्यूज़ फुटेज उसको लेके। इट्स अ टिपिकल मिसिंग हु डन इट काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री जिसके बारे में हमें आज भी पता नहीं है। द डिस्टर्बिंग पार्ट इज दैट अ गर्ल in a family vacation, like this was a typical family holiday, that girl and her family was from UK and they had gone to Portugal for a holiday. This girl just suddenly overnight goes missing, wo gayab ho jati hai, and the suspicion lies on parents and how the parents deal with it and the whole media circus. Now last but not the least, agar aap true crime or in some disturbing documentaries mein into nahi ho, then you can watch something more discovery style, which is on number 5, that is Planet Healers. Now Planet Healers is not exactly a documentary, it is more of a discovery style show. Planet Healers is a very promising and very educational discovery style show. It is not exactly a documentary like I said, बट काफ़ी एजुकेशनल है एंड काफ़ी ज़्यादा एनलाइटनिंग है ऑन वेरियस एनवायरमेंटली फ्रेंडली स्टार्टअप्स। ये शो उन स्टार्टअप्स के बारे में बात करता है हु आर इनोवेटिंग देयर वेज टू क्रिएट अ सस्टेनेबल टुमारो, एंड इट रिमाइंड्स अस अबाउट क्लाइमेट चेंज, अबाउट ई वेस्ट, अबाउट एग्रीकल्चर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एंड उनको कॉम्बैट करने के लिए ये स्टार्टअप्स क्या करते हैं। इस शो को होस्ट किया है नन अदर देन माय फेवरेट जिम साहब। ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब एट होस्टिंग दिस डॉकू प्रोग्राम। इट इज़ वेरी एजुकेशनल। अगर आपके पास टीनेज बच्चे हैं, अगर आप टीनेज बच्चों के पेरेंट्स हैं, या अगर आप खुद एक टीनेजर है, या अगर आपको स्टार्टअप्स के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में इंटरेस्ट है, देन दिस डॉक्यूमेंट्री इज अ मस्ट वॉच। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्री या डॉकू सीरीज है, देन डू लीव अ कॉमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली गिव अ हार्ट। आई नो मेरी सारी जितनी भी रिकमेंडेशंस थी वो डॉकू सीरीज थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट्री, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं देखी है। इट्स जस्ट कि कई, लाइक आई सेड, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम, जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, वहाँ से हट चुकी है, एंड आई पर्सनली डोंट रिमेंबर कि कौन सी मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, एंड दिस वाज अ टफ वन टू, एंड पर्सनली दिस वाज अ टफ वन फॉर मी टू रिसर्च ऑन, बिकॉज आई वांटेड टू गिव नॉट जस्ट डॉकू series but also documentaries, like proper documentaries. So that's it. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास और कोई डॉकू सीरीज या डॉक्यूमेंट्रीज की रिकमेंडेशन हो, then do leave a comment below. आई नो मैंने जितनी भी अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट में डाला है वो सारी की सारी डॉकू सीरीज है, एंड दे आर नॉट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, बिकॉज लाइक आई सेड, मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी देखी है, लेकिन अधिकतर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हट चुकी थी, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम, हाउ टू, basically it was a very tough research for me, because I had to actually go down the memory lane and like, okay, you know, I watched this documentary but I don't remember the documentary film's name. So जितनी भी मैंने इस लिस्ट में recommend किया है वो सारी डॉकू सीरीज है, but nonetheless docu series या documentaries almost one and the same thing. You guys can enjoy watching and learning. And like I said, अगर आपके पास कोई और suggestion हो, चाहे documentaries या docu series जो मुझे देखनी चाहिए, या अगर आपको इन documentaries में से कोई भी documentary आपको पसंद आई हो, या अगर आप मेरी choices से agree करते हो या disagree करते हो, then do leave a comment below. Also make sure to subscribe to my channel. Do give this video a big thumbs up. कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।